हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ एज द एग्जामिनेशंस आर क्वाइट क्लोज, इट इज important फॉर अस टू रिवाइज द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ताकि हम लोग प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। So, in this lecture, I am going to give a revisionary session for residential status and scope of total income. As already discussed with all of you, I will be sharing revisionary sessions for the some of the important topics of our syllabus. So one by one, I'll be releasing the videos, and apart from the sessions which I'll be releasing, आप लोगों को अगर कहीं पर भी लगता है कोई से भी टॉपिक में कोई भी उसमें that you require some kind of help, you know, there is some kind of difficulty you're facing, you can surely reach out to me and I'll try to help you out. चलिए, so let us start. Residential status and scope of total income. This particular chapter not only is important for CA Inter, but is also very important for CA final students as well. And as I always say, whenever मैं ये chapter पढ़ाती भी हूँ, I always say this, that in the scenario which we are right now, when we are practically seeing, like as I also work in the field of income tax, it is very important to be very sure of residential status and scope of total income. This particular concept has gained a lot of importance in today's scenario because there is a lot of non-resident payments or non-resident transactions which are happening from India. So ये chapter हमारे लिए ना ही सिर्फ examination point of view से important हो जाता है, but the concepts which you will build over here are very, very important for your practical like exposure or practical working of income tax as well. So let us start. Residential status and scope of total income. This whole chapter talks about two major aspects, residential status and scope of total income. So पहले बात कर लेते हैं what is residential status. Determination of residential status basically means कि आप किसी भी assessee का or a person, like whether it is an individual or HUF or company etc, how will you determine that the person is resident in India or not? आप कैसे पता करोगे कि वो व्यक्ति इंडिया का resident है या नहीं? Now very important point to be kept in mind, resident does not necessarily mean that he is a citizen or domiciled in India. अगर मैं इंडिया की citizen हूँ तो मैं इंडिया की resident हूँ जरूरी नहीं है, and vice versa. अगर मैं इंडिया की resident हूँ तो citizen हूँ जरूरी नहीं है. So please make sure कि वो residential status का citizenship से कोई direct connection हो जरूरी नहीं है. So we are going to focus on how to determine whether a particular person is a resident in India or not, right? Now, why is it important? Determination of residential status is important to know the scope of total income. That means किसी भी person की कौन सी income इंडिया में chargeable to tax होगी. Let's take a simple example. Suppose मैं 2 महीने के लिए किसी प्रोजेक्ट पर यूएस गई, वहां पे मैंने काम किया, मैंने यूएस डॉलर्स में सैलरी अर्न करी, सर्विसेज इंडिया के बाहर दी है, सैलरी इंडिया के बाहर मिली है, और फिर मैं वापस 2 महीने बाद इंडिया आ गई. ये 2 महीने की इनकम मेरे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं will depend on my residential status. Getting the point? So basically residential status determine करना इसीलिए जरूरी है ताकि हम ये पता कर सके कि इस व्यक्ति की कौन सी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है. So first part is determining the residential status, and then basis on that residential status you will have to calculate the total income of that particular person कि इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए इंडिया में जो चार्जेबल टू टैक्स रहेगी. ठीक है? So let us first start how to determine the residential status. Okay, so to determine the residential status there are different rules for different categories of persons, that is individual, HUF, firm, etc. We start one by one. Residential status can be of 3 categories in case of individual HUFs. So it can be resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. For firms, companies, LLPs, etc., it can be either resident or non-resident. तो ये जो ordinary, not ordinary वाला concept है, ये सिर्फ individuals और
सॉरी, एचयूएफ के केस में ही अराइज होगा। ओके, चलिए सो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन बिकॉज इंडिविजुअल्स का रेसिडेंशियल स्टेटस पिछले कुछ सालों से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले से भी इंडिविजुअल्स का रेसिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही था, कुछ अमेंडमेंट्स हुए 2-3 साल पहले और उसके बाद और एडिशनल कंडीशंस उसमें ऐड हो गई। So whenever you are calculating residence status of an individual, you need to pay attention to a lot of points which are very, very important. Now let us start. What is the first condition that we need to check? The first basic condition that is to be checked is that stay should be at least 182 days in the relevant previous year. Now whenever you are writing the answers, बहुत सारी बातें जरूरी होती है। मैं रिवीजन सेशन में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो टिप्स होती हैं वो भी बताते जाऊंगी ताकि आपका ओवरऑल वो चैप्टर क्लोज होता जाए। Now whenever you are writing the theory answer, because residential status में स्पेशली इन सीए इंटर्स बहुत बार थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग यू नीड टू राइट डाउन। तो प्रोविजन वगैरह तो लिखोगे नो डाउट, जहां पर प्रोविजन लिखोगे relevant previous year is a very important term which you need to keep in mind. So if we are talking for our attempt, we are going to attempt for assessment year 24-25, our relevant previous year will be 23-24, right? तो जब आप बोलोगे कि stay of 182 days or more in the relevant previous year, that means in the previous year 23-24, for that particular year जिस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस आप चेक कर रहे हो, उस साल अगर वो कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। ओके, अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस में चेंज फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर, ऐसा नहीं कि वंस अ रेसिडेंट ऑलवेज अ रेसिडेंट, ऐसा नहीं होगा, आपको चेक करते रहना पड़ेगा, स्पेशली इन केसेस अगर आपका आने जाने का काम है। लेट्स सपोज आप यहीं रहे हो हमेशा से इंडिया में, तो मोर ऑफ चांसेस है कि आप आर ही रहोगे हर साल, बट अगर आने जाने का काम है, बार बार इंडिया से आना जाना करना पड़ता है, तो एवरी ईयर यू नीड टू calculate your residential status. So first basic condition, you have to stay for at least 182 days or more during the relevant previous year. Second basic condition is, if this first basic condition is not fulfilled, second basic condition that you need to check is 60 days or more in the relevant previous year. मतलब 182 days तो नहीं है, ठीक है, बट कम से कम 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड यहाँ पर एंड कंडीशन है, कहाँ एंड है कहाँ और है ध्यान रखना है। एंड 365 डेज और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर 23-24 से पिछले 4 सालों में मिलाकर टोटल अगर 365 डेज या उससे ज्यादा का स्टे रहा है, तो पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज वो नहीं फुलफिल हो रही है अगर, तो या तो 60 डेज करंट ईयर मतलब रेलेवेंट ईयर में, या फिर उसके पिछले 4 सालों में टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा का अगर आपका स्टे रहा है, देन यू विल बिकम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल कर देनी है, या दोनों फुलफिल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही, ना 182 डेज ना 6365, देन यू विल बी अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, सो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इफ यू फुलफिल either of them, you become a resident in India. Getting the point? 182 60 plus 365 मैंने हाईलाइट किया है, देखो कहां पर और है कहां पर एंड है, पे अटेंशन टू दैट। Now once you have determined whether the person is a resident, like individual is a resident or not, you need to check some additional conditions to know whether he is ordinarily resident in India or not. So ordinarily India में resident होगा कि नहीं, ये देखने के लिए हमको कुछ additional conditions देखनी होती है। क्या additional conditions देखनी होती है? First, he should be resident in India in at least 2 out of 10 preceding previous years. Additional conditions के लिए आप पिछले साल देखोगे, मतलब रेलेवेंट ईयर नहीं देखना है, रेलेवेंट ईयर के पीछे के ईयर्स देखने हैं। ठीक है, सो रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो प्रीवियस ईयर 23-24 के पहले जितने भी 10 साल हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 के पहले मतलब 22-23, 21-22, 20-21, ऐसे आप पिछले 10 में से कोई भी 2 सालों में अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट हुआ है, एंड अगेन एंड he has a stay
of at least 730 days, that is 730 days or more in the preceding 7 previous years. Again, preceding 7 previous years. So when you are writing the answers, you have to be very sure that you need to use the word previous year, like where you have to use the word relevant previous year and where you have to use the preceding previous year. देखो language भी देखेंगे तो in during the previous year 182 days, 60 days or 365 days in the immediate 4 years immediately preceding the previous years, right? So वो आपको specifically ध्यान में रखना है. So these points are to be kept in mind. If both of these additional conditions are fulfilled, the individual becomes a resident, an ordinary resident. And if any of them is not fulfilled or both of them are not fulfilled, मतलब आपने ये वाली conditions तो fulfill कर ली, basic वाली तो conditions fulfill कर ली, लेकिन ये additional में से कोई एक या दोनों ही अगर fulfill नहीं हुई है तो you become a resident बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. सपोज कोई व्यक्ति है जो फॉरेन में रहता है, मोस्टली इंडिया के बाहर रहता है, बीच में किसी प्रोजेक्ट या कुछ बिजनेस एक्सप्लोर करने के हिसाब से वो इंडिया आया हुआ है एंड ही इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर लाइक 8 to 10 months इन प्रीवियस ईयर 23-24. सो ही हैज क्रॉस द लिमिट ऑफ 182 डेज. तो वो रेसिडेंट हो गया, लेकिन वो पहली बार ही आया है, वो ऐसे नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता है, या आता भी है तो थोड़े दिन आकर के चला जाता है. ही इज नॉट रेगुलरली स्टेइंग इन इंडिया और ये वाली जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो देन ही बिकम्स अ रेसिडेंट फॉर द रेलेवेंट ईयर बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. मतलब इस साल तो रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरीली इंडिया का रेसिडेंट नहीं होता है. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू चेक whether the individual is a resident or resident or not, and if he is a resident, then he is a resident, an ordinary resident or an RNY. Now when you say this is the general conditions which are applicable on every individual, ठीक है, ये general conditions हैं जो सब लोगों के लिए आपको चेक करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिविजुअल्स का स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर खत्म नहीं होता. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ इनकम टैक्स एक्सेप्शंस के बिना तो अधूरा है ना. सो इनकम टैक्स, आई ऑलवेज से दैट इनकम टैक्स इज एन एक्ट ऑफ एग्जेम्पशंस. यू नीड टू नो, you need to be very much sure of the exceptions. एग्जामिनेशन में एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. So let us talk about what are the exceptions in case of residential status. Exceptions in the following cases: you are not supposed to check the second basic condition of checking the residential status. दो basic conditions बताई मैंने. दो basic conditions में से अगर कोई भी एक fulfill कर लेते हो तो आप resident हो जाओगे, अभी हमने बात करी. However, in this case, which case I'm telling you, in these two cases you are not supposed to check the second basic condition. मतलब हम लोगों को ये जो 63-65 वाली कंडीशन है ये चेक नहीं करनी है. एग्जाम में ध्यान रखना, अ कॉमन पॉइंट जहां मैक्सिमम गलतियां होती है, एग्जाम में क्वेश्चन एक्सेप्शन का आता है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है लेकिन हमें चेक ही नहीं करनी है. बट यू नो, यू गेट एग्जामिनेशन है, प्रेशर है, अंडरस्टैंड, हम उसमें धुन में फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं, जबकि सेकंड बेसिक हमको चेक करनी ही नहीं होती है. ठीक है. सो let us understand what are the basic exceptions to the basic conditions. So the first exception is that if the particular person, if the particular individual is an Indian citizen, who is leaving India during the relevant previous year. जिस साल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो वो उसी साल इंडिया से बाहर जा रहा है as a member of the crew of an Indian ship, या तो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए बाहर जा रहा है. तो सपोज आप लोगों का जो भी रेलेवेंट सीए फाइनल का अटेम्प्ट रहेगा, यू क्लियर योर सीए फाइनल्स, है ना. सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मई 24 में आपका सीए फाइनल क्लियर हो गया और आपका रिजल्ट आएगा कुछ जून जुलाई में रिजल्ट आया, यू अप्लाइड फॉर जॉब्स and supposedly you got some kind of opportunity which was leading you to outside India. You were more than happy that yes, मुझे अच्छा है, मैं बाहर जाने को ready हूँ. And meanwhile in October, November you shifted out of India for the purposes of employment for this relevant year. Which relevant year will be there? The previous year will become 24-25. अगर आप
if you are calculating your residential status for 24-25 previous year, and अगर आपने इंडिया छोड़ा है for the purposes of employment in September 24, let us say, आपके लिए second basic condition check नहीं करी जाएगी, provided you are an Indian citizen, which I am assuming you are, right? So Indian citizen leaves India for the relevant previous year as a crew of Indianship, member of crew of Indianship, or for the purposes of employment outside India, you are not going to check 63-65. Or second exception, Indian citizen or a person of Indian origin. Who is a person of Indian origin? Any person who himself or his either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India is a person of Indian origin. Who is outside India? नॉर्मली इंडिया के बाहर रहते हैं, तो कोई भी अपना रिश्तेदार इमेजिन करो जो इंडिया के बाहर रह रहा है ना. आई होप बहुत कॉमन है आजकल, तो इट्स वेरी कॉमन. I have a lot of relatives who are settled outside India now. So he is outside India. He is an Indian citizen or a person of Indian origin, but he is outside India and is coming to a visit in India during the relevant year. तो किसी की फंक्शन में या किसी भी वजह से वो इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इंडिया के बाहर रहते हैं. गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों में अंतर है. फर्स्ट इज आप इंडिया के बाहर जा रहे हो पहली बार एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो जो साल है जिस साल यू आर लीविंग फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एट दैट पर्टिकुलर ईयर यू विल चेक, you will not check the second basic condition. Second, नॉर्मली आप इंडिया के बाहर रहते हो, आप इस साल इंडिया विजिट के लिए आ रहे हो, अगेन यू विल नॉट चेक द सेकेंड बेसिक कंडीशन. तो सिर्फ 182 डेज की कंडीशन देखी जाएगी. इन दोनों केसेस में अगर 182 डेज फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, नहीं तो 63-65 चेक नहीं करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, केप्ट इन माइंड. तो अभी तक क्या क्या बात करी? 182 और 63-65 नॉर्मली देखना होता है, लेकिन इन दो केसेस में you will not check the second basic condition. However, in case of Indian citizen or person of Indian origin, मतलब ये जो second वाला exception है, there are certain additional conditions which we are supposed to check. तो 63-65 तो नहीं देखना है, लेकिन उनके केस में कुछ additional conditions हमको देखनी होती हैं. अगर वो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उसे डीम्ड आरएनओआर मान लिया जाएगा. Okay, so if the question is of Indian citizen or person of Indian origin who is coming to India for the purposes of visit of India, who is normally residing outside India, थोड़ा सा आपका जो वो है ना उसको मतलब you have to just क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि अरे यहाँ पर एक और एडिशनल कंडीशंस हम लोगों को देखनी रहती हैं. तो जब अगर क्वेश्चन इंडियन सिटीजन से शुरू होता है और अगर ये वाला कंडीशन है कि विजिट टू इंडिया, क्या क्या देखोगे? फर्स्ट 182 डेज, 182 डेज हो गया तो स्ट्रेट अवे रेसिडेंट हो गया, है ना. दूसरा 63-65 नहीं देखना है, दूसरा आपको देखना है एटलीस्ट 120 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर and 365 days or more in the 4 previous preceding years, plus the person is having total income which is accruing in India exceeding rupees 15 lakhs. तो अगर वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, who resides outside India, is coming to a visit in India, then you will have to check the 182 days condition. Apart from that, you're not supposed to check 60 days. in उसकी जगह पर आपको 120-365 देखना है. प्लस ऑल दीज कंडीशंस आर इन एंड. ओके, प्लस अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एक्सीड्स 15 लाख, और कौन सी इनकम? विच इज अक्रूइंग इन इंडिया, मतलब other than income from foreign sources. So income which is accruing in India or income which from business which is controlled in India basically, then it will be considered, then the person will be treated as a resident in India. Okay, so आपको 120 days check करना है, आपको 60 check नहीं करना है. And both of these are again and conditions, 120 plus 365. ठीक है, so these are the additional conditions which are supposed to be checked if the person is an Indian origin, person of Indian origin or an Indian citizen coming to a visit in India. Okay, so these points are to be kept in mind. So यहाँ पर हमारा जो normal provisions है वो residential status in case of individuals के close होते हैं.
Now, when we talk about another point which has been now added as an amendment is a deemed resident. A new section altogether has been added, which is 61A, deemed resident. ये उन केसेस में अप्लाई होता है जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर उसकी इनकम अगेन विच इज अक्रूइंग इन इंडिया or from business set up or controlled in India, that is income other than from foreign sources, is exceeding 15 lakhs, will be deemed to be a resident in India, provided that he is not liable to tax in any other country for the purposes or by the reason of his domicile or residence or any other criteria. So अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल प्रोविजंस की वजह से नॉन रेसिडेंट है, जैसे हमने वो पूरा चार्ट देखा है ना, फ्लो चार्ट देखा, तुमने सारी कंडीशंस चेक कर ली, से इन 182 डेज, 60 डेज, ये वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो जो तुम्हारे ऊपर अप्लीकेबल था, तुमने सब कुछ चेक कर लिया और वो व्यक्ति जो है वो नॉन रेसिडेंट निकला, ठीक है। अब आपको देखना है 61A, मतलब अगर क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन दिया है, इंडियन सिटीजन दिया है, और ये पकड़ना बहुत आसान है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन में, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, बस वो लाइन दिखी ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 61 अप्लाई हो सकता है ना। तो इंडियन सिटीजन इफ हैविंग इनकम मोर देन 15 lakhs, कौन सी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस जो कि इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है उसको छोड़ करके, however if it is from business control in India it will be considered for this 15 lakhs, will be deemed to be resident if he is not liable to tax in any other country. तो बहुत ध्यान से देखना है, अगर वो किसी और कंट्री, तो उनका ऐसा कहना है कि भैया तुम इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, तुम्हारा इंडिया में अक्रू हो रही है जो इनकम या फिर जो कंट्रोल बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है वो 15 लाख से ऊपर निकल चुकी है, और तुम्हारा कहीं और तुम लायबल टू टैक्स नहीं हो अगर, तो तुम यहाँ पर टैक्स दे दो, इंडिया में हमको टैक्स दे दो, हम तुमको डीम्ड आरएनआर मान लेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस विल बी एप्लीकेबल, हाउएवर दिस विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट एज पर 61। जो मैंने बताया कि ऊपर जो हमने कंडीशंस पढ़ी, जो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा, अगर इसके बेसिस पर रेसिडेंट हो जाता है तो फिर वो डीम्ड रेसिडेंट तक नहीं पहुंचेगा। तो दैट इज द लास्ट स्टेप विच यू हैव टू check, है ना। So this is how you will be calculating the residential status of an individual. I hope you get it. So first of all you have to check 182 days, 182 days नहीं तो फिर 63 65 days। यहाँ पर एक्सेप्शन ध्यान रखना है, एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस या क्रू मेंबर या फिर विजिट टू इंडिया। अगर विजिट टू इंडिया है तो फिर से आपको 120 डेज और 15 लाख वाला चीज भी ध्यान रखना है। इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आप यू कैन स्टेट अवे से अ नॉन रेसिडेंट। इनमें से अगर कुछ आपका सेटिस्फाई हो जाता है लाइक 182 या 63 65, you go to the additional conditions, check whether he is an ordinary resident or not, and accordingly you will give the determination कि ये ROR है, RNOR and NRA. So all these conditions are to be kept in mind. Now how should be your flow? बहुत बार स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि मैम कंडीशंस तो याद हो गई हैं, ठीक है, पता है कि ये चेक करना है, बट फ्लो क्या रहना चाहिए क्योंकि मिस हो जाता है, इतने सारे कंडीशंस है, इतने सारे डेज हैं। सो आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू हाउ शुड योर फ्लो बी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चेक 182 डेज, 182 ये फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट इसीलिए बनाया मैंने, इसी फ्लो में चलना है आपको। 182 डेज है, क्लियर कट बात वही खत्म हो गई। नहीं है तो 63 65 देखना है कि नहीं, उसके लिए यू हैव टू चेक एग्जामिनेशन में एक्सेप्शन कंडीशन तो नहीं दी है, वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्शन कंडीशन है तो फिर सीधे नीचे आ जाओ, कहां पर, इधर 120 डेज 365 डेज, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वाला है। फर्स्ट वाला है तो वो भी नहीं करोगे, सेकंड वाला है तो ये देखोगे, है ना। अगर ये भी नहीं है, एक्सेप्शन कंडीशन नहीं है, तो फिर अपना फ्लो चार्ट नॉर्मल जैसे है वैसे चलता रहेगा, अकॉर्डिंगली ROR NOR बता दोगे। अगर एक्सेप्शन है तो फिर ये वाली एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि वो इंडियन सिटीजन या विजिट इन इंडिया वाला केस तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर लास्ट आपको 61A चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली कंक्लूजन देना है। So this is how you will be determining the residential status of an individual. सबसे ज्यादा डिटेल्ड में residential status of individual ही डिस्कस करना जरूरी होता है because there are a lot of additional conditions in this case. Also
अपार्ट फ्रॉम लाइक HUF AOP वगैरह, इंडिविजुअल इज द मोस्ट जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, तो इसीलिए उसको प्रॉपरली समझना जरूरी है. नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ डेज, आपका अराइवल और डिपार्चर दोनों के डेज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलो. Now let us talk about HUF. HUF very simple. अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्शियली इंडिया में है, या तो पूरा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या थोड़ा भी अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, the HUF will become resident in India. If not, if the control is wholly outside India, the HUF will become a non-resident. Now, to check whether the HUF is a resident and ordinary resident, you have to check the status of Karta. अगर कर्ता एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, मतलब कर्ता आरओआर है, तो रेसिडेंट HUF भी आरओआर हो जाएगा. अगर कर्ता आरओआर नहीं है, मतलब या तो कर्ता नॉन रेसिडेंट है या तो कर्ता आरएनओआर है, HUF विल बिकम आरएनओआर. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक द कंट्रोल मैनेजमेंट. कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट. देन यू हैव टू चेक कर्ता आरओआर है तो HUF भी आरओआर, अदरवाइज आरएनओआर. गेटिंग द पॉइंट? सिंपल. This is how you determine the residential status of an HUF. Now, let's talk about company. In case of company, if it is an Indian company, it is a resident by default. If it is not an Indian company, then you have to check whether the place of effective management, very, very important concept in case of companies. So I will be releasing a separate video on POEM. Okay, POEM पे अलग से मैं आपको एक वीडियो दूंगी, because how to determine POEM, it is a part of CA final syllabus, but it is a very important topic. So POEM एक अलग से डिस्कस करेंगे हम, बट अभी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर POEM इंडिया में है, yes, the company is resident in India. If the POEM is not in India, then it is a non-resident. So for if it is a non-Indian company, POEM India में है तो resident, नहीं तो non-resident. So these are the ways how you determine the residential status. फर्म LLP AOPs के केस में मतलब बैलेंस जो भी बच गए, कंट्रोल मैनेजमेंट चेक करना है. अगर थोड़ा भी इंडिया में है, इफ द कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली और पार्शियली इन इंडिया, देन द entity is resident, otherwise it is a non-resident. So very simple. This is how you will determine the residential status. Now what? Residential status तो निकाल लिया, अब क्या? Why is it so important to determine the residential status? Because as I told you, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी इनकम जो है वो इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होगी. ठीक है, सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ income chargeable to tax in India, you need to understand there are two rules of taxation of income in India. First rule talks about your source rule, and the second rule talks about residence rule. Okay, yeah, residence rule or source rule. Residence rule मतलब जो हमने अभी पढ़ा, determining the residential status, and the second is source rule, मतलब इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रूल अगर आप फुलफिल कर देते हो तो इंडिया में इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी. मतलब अगर आपने रेसिडेंशियल रूल फुलफिल कर दिया, रेसिडेंशियल रूल फुलफिल कर दिया मतलब अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि आपने रेसिडेंस रूल फुलफिल कर दिया. अब आप कहीं से भी इनकम कमाओ, सोर्स रूल का कोई मतलब नहीं है. इंडिया के अंदर इनकम हो रही है, इंडिया के बाहर इनकम हो रही है, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. व्हेन यू आर चेकिंग द सोर्स रूल, मतलब इनकम अगर इंडिया में जनरेट करी है, इनकम इंडिया से अर्न करी है, irrespective of your residential status, irrespective of your residential status, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. So either of the residence rule or source rule you have to fulfill. ठीक है, तो सोर्स रूल, सपोज कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी, उस पे उसको रेंट की इनकम हुई, इनकम इज जनरेटेड इन इंडिया, दैट मीन्स दैट इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. आई बात समझ में? तो रेसिडेंस रूल क्या है हमने समझ लिया, सोर्स रूल क्या है वो समझेंगे. ये टेबल आपका पूरा स्कोप ऑफ इनकम को समराइज करता है. Income which is accrued in India or deemed to accrue or arise in India, then
it is chargeable to tax in hands of all the people, that is whether he is an ROR or RNOR or NR, irrespective of residential status. Source rule fulfill हो गया. Income is generated in India, taxable in India. Simple. तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रेसिडेंशियल स्टेटस का, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक, इज द इनकम जनरेटेड इन इंडिया? यस, बाकी सब छोड़ दो, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. हाँ, आगे ऑब्वियसली एग्जेम्पशन वगैरह के प्रोविजंस हो सकते हैं दैट यू हैव डिस्कस्ड इन रिस्पेक्टिव हेड्स, वो हम हेड्स पे रिवीजन करेंगे तब बात करेंगे, बट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया तो हो जाएगा, है ना. अब अगर वो इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसकी भी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, बट चार्जेबल टू टैक्स है, उस पे इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे, है ना. सो बेसिकली यू हैव टू चेक whether that income is accrued or deemed to be accrued or arised in India, then it is chargeable to tax for all. If the income is received or deemed to be received in India, accrue भले ही बाहर हुई है, बट अगर आपने उसको इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव कर लिया, if it is received in India, then also it becomes taxable for all the category of persons. ठीक है, तो income which is accrued or received or deemed to be accrued or arisen or deemed to be received in India is chargeable to tax for ROR, RNOR, NR, all categories. Talking about the income which is accruing outside India, अब अगर income इंडिया के बाहर accrue हो रही है, मतलब आपका सोर्स रूल फुलफिल नहीं हो रहा है ना. इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, सोर्स रूल फुलफिल नहीं हो रहा, क्या देखेंगे? रेसिडेंस रूल. तो ROR है, रेसिडेंस रूल फुलफिल हो चुका है, इट विल बी टैक्सेबल. तो देखो ROR में तीनों टिक लगे हुए हैं, इनकम कहीं से भी कमाई हो, ग्लोबल इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. In case of RNOR and NR, income accrued outside India is not chargeable to tax. Getting the point? ध्यान से समझना. सोर्स रूल फुलफिल हो रहा है, सबको टैक्स देना है. रेसिडेंस रूल फुलफिल हो रहा है, ROR, उसको सारी इनकम पे टैक्स देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स. ठीक है, सो ग्लोबल इनकम बिकम्स टैक्सेबल. Most important one exception in case of ROR, if an ROR is having an income, sorry, RNOR is having an income which is from a business controlled from India, even if it is accruing outside India, it will become chargeable to tax. तो suppose मुंबई से कोई business control किया जा रहा है, वो बिजनेस सेटअप सिंगापुर में है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, सेटअप पूरा इंडिया में किया गया है, इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, दो द प्रॉफिट आर अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, दैट प्रॉफिट will become chargeable in the hands of RNOR, not in the case of NR. ठीक है, so ROR, RNOR, NR, depending on your residential status and depending on the source of generation of that income, you will decide which income will be chargeable to tax in India. Now let us just have a quick overview of what are the incomes which are deemed to be accrued or arisen in India. Now, so we discussed the scope of total income depending on the residential status, what will be the things, what will be the nature of incomes that will be included in the scope of total income and what will not be included in the scope of total income. Now, whenever any income is deemed to be accrued or arisen in India, it is taxable in the hands of ROR, RNOR, NR. And if it is received or deemed to be received in India, so again that will be chargeable to tax in hands of ROR, RNOR, and NR, all the three categories. So what is the income that is deemed to be received in India? Contribution in excess of 12% of salary to the recognized provident fund or interest in excess of 9.5% in the RPF that is deemed to be received in India. Contribution by central government or any other employer under pension scheme NPS, ATCCD is again deemed to be received in India. And amount transferred from URPF to RPF being the employer's contribution and interest thereon is again subject to tax in India, considering it as deemed to be received in India. So basically all these incomes, if a person is having any kind of such incomes, whether the person is a resident or a non-resident, he will have to pay tax considering the income as deemed to be received in India.
Talking about income accruing or deemed to accrue arise in India, there are some specific cases or some specific nature of incomes which are considered to be income deemed to be accrued or arisen in India. So let us start one by one. We'll just discuss income accruing or arising outside India directly or indirectly through or from any business connection in India. So basically, if there is any business connection in India, the non-resident is having any business connection in India, even though if the income is accruing outside India, but if it is through a business connection which is established in India, it will become deemed to accrue arise in India and it will become taxable in India. So basically, the income shall be taxable in India if it is through a business connection or any property or asset or source in India. Simple, if you have an FD in your bank, उसका जो भी interest है, तो आप भले ही non-resident हो या आप resident हो, whatever, but if you are having an FD in an Indian bank, the interest is accruing in India, you will have to pay tax on that. Transfer of capital asset situated in India, any asset which is situated in India, and if you are transferring that capital asset, आपका कोई asset है, let us say आपका कोई घर है, आप बेच रहे हो, it will be considered as income which is accruing or deemed to be accrue arise in India. So this will be considered as chargeable to tax. Next, income deemed to accrue arise in India में और ही additional points हैं which are again considered as income deemed to accrue arise in India. This is the most important part of section 9, that is interest, royalty and fees for technical service, and most priority question आने की यहीं से बनती है. Now, when we talk about interest, royalty and fees for technical services, keep in mind the whole concept of charging to tax any income of a non-resident is that if the income is being generated in India, जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि if an income is generated in India, if it is being earned from India or directly or indirectly, then that will be chargeable to tax irrespective कि आपका residential status क्या है. So when we are talking about interest, royalty and FTS, again you have to pay attention. अगर वो actually utilize India में हो रहा है तो फिर उसमें जो भी इनकम इंडिया में आप बिजनेस में उसको यूज कर रहे हो और उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस पर टैक्स देना पड़ेगा. सो लेट अस से एक इंटरेस्ट का छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट से कोई लोन लिया और उस पैसे को इंडियन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. उसका इंडिया में कोई बिजनेस है. लेट्स से मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट, B is also a non-resident, and A has a business in Mumbai. So A took some loan from B and invested that amount in India. Okay, one non-resident has taken loan from another non-resident, ध्यान से समझना, और वो पैसा इन्वेस्ट इंडिया के उसने अपने बिजनेस में कर दिया. ठीक है, अब ये पैसे पे जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, लोन लिया है, जो आप जिसने लोन लिया है, द पर्सन विल बी पेइंग इंटरेस्ट टू द अदर पर्सन. क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली यूटिलाइज इंडिया में हो रहा है, the interest shall become deemed to accrue or arise in India, therefore will become chargeable to tax in India in the hands of that non-resident जिसने लोन दिया था. Okay, so same is the case of royalty, FTS. एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं हाईलाइट करती हूँ कि कहाँ पर डिफरेंस है, बट एक ब्रॉडली देखा जाए तो इन तीनों ही केसेस में आपको ये चीज देखनी होती है कि अल्टीमेट यूज इन केस ऑफ FTS, the technical services, the services for which you are paying that fees, वो particular services कहाँ utilize हुई हैं. If that is in India, you have to pay. That will be considered as deemed to accrue arise in India. Now let us discuss what is the what they have given. So if you pay attention, there is a very minute difference. I'll just highlight it so that it is in your mind at the time of examination. Interest payable by रेसिडेंट इन इंडिया, अगर रेसिडेंट पे करता है तो बाय डिफॉल्ट वो टैक्सेबल है. सेम रॉयल्टी अगर रेसिडेंट पे कर रहा है टैक्सेबल है. एफटीएस अगर रॉयल्टी एफटीएस इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट पे कर रहा है टैक्सेबल है, except if it is used for purposes outside India. तो एक्सेप्शन में क्या बोला है? If the money borrowed and used or technical services or royalty are utilized for the purposes of business or profession outside India. मतलब अगर
पेमेंट जो पैसा यूज हुआ है वो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर यूज हुआ है तो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा. सो इवन इफ द पर्सन हु इज पेइंग द इंटरेस्ट is a resident, but if the money was utilized outside India, it will not be chargeable to tax in India. If the money borrowed, used, or technical services or royalty are utilized for making income from any source outside India, again it will not be chargeable to tax in India. तो मैंने क्या बोला, क्रक्स ये ध्यान रखो कि अल्टीमेटली कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है. गवर्नमेंट ने अगर पे किया है तो टैक्सेबल ही है, यही अज्यूम किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है तो इंडियन बेनिफिट के लिए ही कर रही है. नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को पे किया, जो मैंने एग्जांपल दिया था, इफ द मनी बोरोड इज यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन इन इंडिया. तो जैसा मैंने बताया, मुंबई में एक बिजनेस में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो इंडिया में यूज हुआ है, भले ही नॉन रेसिडेंट ने यूज किया है, इसको इंडिया में टैक्स करना पड़ेगा. एंड इफ द टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन or making any income in India, it will become deemed to accrue as in India. Now, what is the minute difference if you all have observed? In this case, उन्होंने सब में, तीनों में, मतलब रॉयल्टी, एफटीएस और इंटरेस्ट, तीनों में उन्होंने ये बोला है कि फॉर business purposes or any other source of income. लेकिन in case of non-resident to non-resident, money borrowed is used for business purposes and technical services and royalty for business or any other sources of income in India. Getting the point? So यहाँ पर ये एक minute सा difference है कि इंटरेस्ट वाले केस में उन्होंने एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम का केस नहीं दिया हुआ है. सो दीज आर द पॉइंट. तो व्हेनेवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, पे वेरी मच अटेंशन, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस का. सो आपका आंसर मोस्टली वहां पर ही सॉल्व हो जाएगा. लास्टली, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग सम ऑफ मनी paid without consideration. This is in line with the gift provisions that we have in 56(2)(10), but by a person resident in India to a non-corporate non-resident or a foreign company or to RNOR where aggregate such sum exceeds ₹50,000. तो अगर ऐसा कोई रेसिडेंट है जो बाहर पेमेंट कर रहा है एक नॉन रेसिडेंट को, तो फिर उसके ऊपर या RNOR को 50,000 से ऊपर, that sum considering gift provisions, that sum will become chargeable to tax in India, being deemed to accrue arise in India. So this is the income which is deemed to accrue arise in India. Business connection हमने बात करी. एक brief overview ले लेते हैं. What is business connection? So majorly business connection is when you are having some kind of agent or someone who is acting on your behalf in India. So if the non-resident is having someone who is acting on his behalf in India, then any income generated would be considered as a business connection. There can be an indirect business connection as well. So through a non-resident, जैसे एक non-resident दूसरे non-resident के through अगर business connection established हो रहा है, that is also considered as business connection if both the non-residents are related, है ना. तो डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश ना करते हुए टैक्स अवॉइड करने के लिए अगर कोई इनडायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो भी that will be considered as business connection if both the non-residents are related. That means they are either controlled by each other or both are under a common control. Then that will become chargeable to tax. So agents, if you are having any agent, if someone is acting on your behalf, in that case business connection is established. Again, if someone is having independent status, independent agent है वो, तो business connection established नहीं होगा. Also, one more important point which is to be kept in mind, which is very much relevant in today's scenario. आजकल के जमाने में बिजनेस करने के लिए फिजिकली आपको कहीं पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है. सो बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन को भी अमेंड किया गया था कुछ समय पहले, और उसमें इकोनॉमिक प्रेजेंस, दैट मींस ऑनलाइन इन बिजनेस कनेक्शन को भी एक तरीके से कंसिडर किया गया. सो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इज अ टर्म which is a new term which has been brought in the last some years. बेसिकली इट स्टेट्स कि अगर आपका फिजिकली वो नॉन रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है या उसने कोई एजेंट नहीं भी अपॉइंट किया है, तो भी उसका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा अगर उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है. एंड व्हाट डू यू कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस? Any goods or services or property with any person in India, including provision of download or
data or software if the payment arising from such transaction during the year exceeds 2 crores. So that will mean कि भैया इसका अच्छा खासा presence है इंडिया में, है ना, significant economic presence है, systematic and continuous soliciting of business activities or engaging in interaction with users if the users are at least 3 lakhs. So if these conditions are fulfilled, that will be considered as a business connection and significant economic presence. So all these cases are considered as business connection. Keep in mind, in case of business connection, only the income which is accrued in India, relation to the operations in India, that would only be considered as deemed to be accrued or arisen in India. So these are the aspects which are to be considered when you are considering the scope of total income. So whenever you are solving a question of residential status, determining of residential status is very important correctly. So first correctly determine the residential status, then basis that you have to select कि इनकम क्रू कहाँ हो रही है. कोई भी इनकम आपको दिया और वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करके देते हैं कि मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट हैज एंगेज्ड मिस्टर बी अ नॉन रेसिडेंट who is a consultant to provide technical services in relation to a business which is situated in let's say Bangalore. So ultimately क्या घुमा घुमा के तुम्हारा फोकस किधर जाना चाहिए कि पहले ये देखो कि इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है क्या. तो जिसको इनकम मिल रही है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, पॉइंट नंबर 1. अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ROR है, RNOR है, NR है, basis on that you will calculate the scope कि accrued in India, received in India, deemed to accrue outside India. अक्रूड इन इंडिया के लिए आपको सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनमें से किस में कैटेगराइज करोगे उसको, दैट यू हैव टू बी वेरी मच श्योर, and then basis that you have to calculate your scope of total income, right? So we discussed what is deemed to accrue arise in India in relation to business connection. So सबसे important वाले points मैंने पहले बता दिए, business connection and आपका interest royalty FTS. Some other points of deemed to accrue arise in India: salary for services rendered in India, अगर इंडिया में सर्विसेज दिए हैं, सैलरी मिला है, चार्जेबल टू टैक्स. अलावेंस, ओके, सो दैट विल बी अगेन चार्जेबल टू टैक्स. Salary payable by the government to Indian citizen for services rendered outside India will be again chargeable to tax, क्योंकि सरकार पे कर रही है, इंडियन सिटीजन को दे रही है, लेकिन इस केस में allowances and perquisites are exempt. ठीक है. Dividend paid by Indian company outside India will again be chargeable to tax in India. So basically these are the provisions which are to be kept in mind whenever you are calculating which incomes are accrued in India and deemed to accrued or arisen in India. So these points will be considered, and basis that you will have to check whether the income is chargeable to tax in India or not and calculate the person's total income. So this is where we revised the whole determination of residential status and scope of total income. If you have any issues, any doubts, feel free to discuss. And as I told earlier, अगर आपको आपकी तरफ से कोई टॉपिक लग रहा है कि हाँ मैम हमको इसका थोड़ा सा और डिटेल्ड अगर आप शेयर कर सकते हैं, so that will be also helpful. Do let me know. I'll be more than happy to help you out in your examination days. So all the very best for your examinations. Prepare well, be confident, focus on your revisions, and do your best.